Hey guys, this is Soumya and welcome back to my channel Colors of Life with Soumya. Through this channel मैं आपके लिए new and creative art and craft related ideas लेकर आती हूँ. So in case if you are new to my channel, please do not forget to like, share and finally subscribe the channel. तो चलिए आज की वीडियो के लिए मैं एक बहुत ही यूनिक आइडिया लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए. मैंने इस चैनल पे बॉटल आर्ट तो पहले बहुत बार ही की है, पर इस बार मैं जो करने वाली हूँ वो थोड़ी सी डिफरेंट है. ऑफ कोर्स आई एम गोइंग टू यूज एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल एंड कन्वर्ट इट इनटू समथिंग वेरी यूजफुल. सो आज मैं क्या करने वाली हूँ वो जानने के लिए और कैसे करने वाली हूँ वो जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा. बट लेट मी गिव यू अ ब्रीफ अबाउट व्हाट आई एम एग्जैक्टली गोइंग टू डू. आई एम गोइंग टू टेक एन एम्प्टी मॉइस्चराइजर बॉटल और इस बॉटल को DIY करके आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ हैंड वॉश बॉटल. सो it sounds interesting, right? So without further ado, let's quickly get into the video. सो टू बिगिन विथ इस DIY को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एम्प्टी मॉइस्चराइज़र बॉटल ले ली है. सबसे पहले बॉटल के ऊपर जितने भी स्टिकर्स लगे हुए हैं वो सारे स्टिकर्स मैं निकाल लूँगी और फिर बॉटल को अच्छे से क्लीन कर लूँगी. एंड देन द फर्स्ट थिंग इज़ टू क्रिएट अ प्राइमर ऑन द बॉटल, क्योंकि बॉटल का जो सरफेस है वो बहुत ही स्मूथ है और उसके ऊपर कोई भी कलर लगाऊंगी मैं डायरेक्टली तो वो अच्छे से ग्लो नहीं करेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसके ऊपर प्राइमर लगाऊंगी और वंस द प्राइमर ड्राइज अप, सो यहाँ मैंने वॉयलेट कलर यूज़ किए हैं. एंड एक बार वॉयलेट कलर ड्राई अप हो जाए तो उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर से कुछ रैंडम स्ट्रोक्स लगा दिए. सो these strokes are just in order to give a very vintage sort of look, और उसके बाद then I had this deco transfer sheets. उसमें से मैंने एक अच्छा सा इमेज सिलेक्ट किया है एंड उस इमेज को मैंने इस बॉटल के ऊपर स्टिक कर दी है. और उसके ऊपर I decided to now write a quote. So I'm going to write here morning vibes और इसको black color से मैं कलर करूँगी so that it looks really bright on top of violet. Also quotes आप कुछ भी लिख सकते हो. You can choose some nice quote from the internet also and you can write that even. That is completely up to you. So now it's time to create some highlight over here, otherwise it will look really dull. तो मैं क्या करूँगी, मैं कुछ कलर्स यूज़ करके ये जो मैंने डेको ट्रांसफ़र शीट यहाँ पे स्टिक की है उसके ऊपर कुछ फ्लावर्स का कुछ एक्स्ट्रा पेटल्स और लीव्स बनाना शुरू करूँगी so that it looks more bright and it looks very natural. It looks like a painting, not like a sticker. So next it's time to create some 3D effect और उसके लिए I am going to use the mixed media paste और इसको यूज़ करके मैं इस बॉटल के दोनों साइड में ब्रिक शेप का टेक्सचर बनाना शुरू करूँगी. सो इनिशियली ये थोड़ा देखने में डल लग रहा है बट वंस इट ड्राइज अप इट विल लुक रियली नाइस. So after the mixed media paste completely dries up, the last step that I'm going to apply over here is that I'm going to take an old toothbrush and just I'm just going to dip it in some color. Of course I'll use blue color over here and I'm like kind of going to spray on top of the entire bottle so that it creates a very nice sort of a marble effect. And here of course I tried to color the cap by spray paint but spray paint से ढंग से हो नहीं रहा है. So once again I went back to my acrylic paint and colored it with golden color. Last but not the least, it's really important to varnish our artwork and here is the final output.